Hello, salam everyone. This is Sumi bringing you What's Going On by Sumi, powered by Depilex, a show where we bring you the freshest trends when it comes to hair and makeup, and of course a guest that could be a celebrity from the music industry, from being an actor to anyone who's prominent and you guys would want to know more about. So for right now, moving on to the freshest trends by Depilex. And yet another time I have a very special guest. He is from the music industry, and when I say that, he has a name of his own, a place of his own, and his band especially. When we talk about the Mekaal Hasan band, of course everyone is like, they are one of the top people from the industry. We have Mekaal Hasan. Welcome, how are you? I'm good. So good to have you. Thank you. Insta live session से हम लोग आ गए हैं face to face. बिल्कुल. बस पहला वेव था, दूसरा वेव है. We're careful, सब कुछ चल रहा है, pandemic चल रहा है अभी भी. What all has changed since then? Nothing. Like my life's been the same. You know, like I'm a stay-at-home kind of person. A hermit. तो मैं घर पे ही रहता हूँ. बस इस बार मैंने वो like घर पे रहते साथ साथ मैंने स्टूडियो में भी काम करना शुरू कर दिया थोड़ा सा. अब लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता SOPs फॉलो कर रहे हैं. SOPs मुझे नहीं लगता लोग फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इतने कम लोग आते हैं कि you know it's kind of like you if a person who you've met over 2-3 months has stayed healthy, you know the chances background. are that you know he's okay. Like he's okay, he's all right. So how have you suffered in terms of being a musician, because no gigs are happening, the traveling was stopped for so long, and even now everyone is so hesitant with having gigs and anything concerned with music. How do you see it? We were planning a festival in Karachi, and we had actually started this in Lahore. We had one in Lahore, one in Islamabad, and February was Islamabad. In March we were supposed to do Karachi, and that's when the pandemic was announced. So we never announced the festival. We had spoken to the artists, and then once this lockdown happened, uske beech mein, like when things were like opening up, around I guess late October, थोड़ा सा movement हो रहा था. तो उस पे we were like, okay, let's just do it now. And you know, when you do a festival, you have to plan at least 2 months prior. We were kind of like, because we had done 2 before, we knew exactly what to do. So we did it like, we got the thing up and running, logistics and permissions and all that. And जिसमें सबसे ज़्यादा time भी आपका लगता है, you know, and the artists, we managed to like talk to them again, and then again. And how had you planned the SOPs and all, कि वो lounges देने थे? It was in an open garden. So social distancing, and it was a daytime going into evening festival. So it wasn't कि वो बहुत late चलना था. You know, and there was enough space physically that you wouldn't be crammed in. So it wasn't like, you know. SOPs वगैरह कम नहीं रखा था. But then when it started getting bad and the sponsors were like, abhi mat karein, like just hold off on it. So again we sort of like set it up, but we couldn't announce it. So this has happened to us twice. Oh my God, that is so Karachi. bad. It's bad. It's at the verge of doing something. And then आपको लोगों को फोन करना पड़ता है, दोस्त यार होते हैं, you know, everybody's pumped, convince them कि यार हमने करना है, do this, and then it turns out that you can't do it because you can't do it. Bummer. Yeah, but there's other stuff I remember we spoke about that you were working on. You were working on a documentary on Aisa Khilvi Sahab, and there was so much more. Tell me about that. Well, the documentary we did many years ago. It was an idea that we had, which was that, you know, there's not enough
material there on a lot of the people who have had a significant role and a name in the performing arts. Like there's hardly anything on Roshanara Begum. There's nothing on Tufail Niazi. There's nothing on Mehdi Hasan. There's nothing on Ghulam Ali. So on and so forth. So I knew Ta'allah Saab because Pappu Saab, who plays flute with us, was playing with him as well for the longest time. And all throughout the 80s he was playing with the Ta'allah and then with Nusrat Saab. So I said to him that, and he was always telling me stories about him because they had traveled so much. And the Ta'allah was such a huge public figure and such a huge name in the 70s and 80s. Absolutely. So at his prime, so I had heard all these amazing stories about him, and I'd met him a couple of times as well. So I was like, he's still alive and he's still singing. So बाकी तो Tufail साहब तो रहे भी नहीं. So why wait for that? Exactly. So start with him. And then we had other musician friends of ours from other countries who were interested in the music and in the songs. So we got those guys together. And that was the idea, कि you would take like someone from that family. मतलब जैसे तुफैल साहब की अगर मैं करूँगा तो मैं बाबर और जावेद नियाज़ी से बात करूँगा. तो अब रिलीज करने का क्या सीन है? Because अब pandemic तो चल रहा है. I mean it's there. I mean you really can't do much. We've got the pilot idea for that. तो वो एक अलग चीज़ थी, but that had been done many years ago, and we somehow were never able to find उसका time slot ऐसा था because it was a pilot. It ended at like 18 minutes, but it was intended to be, filled in a little bit. So because the pilot, we didn't really pitch it to anybody. It just lay there. Don't you think now it's all digital and that time slot, like 18 minutes, is more than enough? Yeah, because we had this idea that उसकी documentary part जो होगी कोई 18-20 minute की होगी, and then the songs that we wanted to show would be 3 separate songs with the documentary, because अगर आप आजकल के programs देखें तो उसमें अक्सर आपको आर्टिस्ट की बैकग्राउंड का नहीं पता होता, उनकी लाइफ का नहीं पता होता, वो गाने उन्होंने क्यों पिक किए, गाने लिखे किस तरह के, किन सिचुएशंस में वो गाने यूज़ होते हैं. ताउल्ला साहब के साथ तो वैसे भी उनके इतने डिफरेंट किस्म के गाने हैं, ईसा खेल के ऊपर गाने हैं, फिर वहाँ के जो कल्चर है, विलेज का जो सॉन्ग्स होते हैं वो हैं, फिर उनके ज़्यादा जो वेल नोन सॉन्ग्स हैं, उनकी सब गानों की पीछे एक स्टोरी है, बड़ी मज़ेदार किस्म की स्टोरी है. तो वो मुझे लगता है कि मिसिंग है आजकल के म्यूजिक में, कि वो एक पूरी दास्तान होती थी, पूरी एक फील होती थी गाने की. I think this is gold and you have treasure with you and you're just holding and I'm on just to like it. sitting on it and like I'm just like यार मैंने ये पूरी सीरीज डेवलप करनी है. So that's what that's one of the things I was doing. And then Riwayat was the other thing which we started, which was a music series and a platform actually, not just a series, for artists who जिनके पास they don't have the means कि वो अच्छे स्टूडियोज़ में रिकॉर्ड कर सकें, और अगर वो रिकॉर्ड हो भी जाए और वीडियो बन भी जाए तो उसको मार्केट भी करना है. वो इतना वो तो मतलब अच्छे खासे जो इस्टेब्लिश्ड लोग हैं उनके लिए एक चैलेंज हो जाता है. बिल्कुल. तो एक ऐसा बंदा जो शदरे में रहता है या बेगम कोट में रहता है उसके लिए ये चीज़ करना बड़ा मुश्किल होता है. तो हम लोगों ने ये सोचा था, मेरा ख्याल था कि मैं अपना स्टूडियो जो है और अपनी प्रोडक्शन सर्विसेज जो हैं उन लोगों के लिए यूज़ करना शुरू करता हूँ. तो वो सीरीज That's very nice. That's very thoughtful of you for doing that. लॉजिकल सी बात है, मतलब कि देखें आपको जो म्यूज़िक दिखाया जाता है या सुनाया जाता है वो वाला म्यूज़िक नहीं है जो लोग सुनते हैं. जो लोग हमारे म्यूज़िक सुनते हैं वो तो कुछ और है. Right. ये जो बंदे खड़े इनसे पूछे ना जरा. हाँ सही ये सब सुनते हैं. हाँ नहीं सही है. वो जो हमें पाकिस्तान जो दिखाया जाता है वो असल में ही पाकिस्तान नहीं है. अगर कोई अंदरून शहर नहीं कभी गया या कोई फैसलाबाद नहीं कभी गया या कोई मतलब पाकपतन नहीं कभी कोई बंदा गया. मैं इन सब जगहों में गई हूँ, मुझे कुछ बोल मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे इस वक्त ऐसे हमारे हैं मम्मी डैडी किस्म के दोस्त जिनको तो पता ही नहीं जगहों का. अंदरून शहर को उनको समझ नहीं आती कि क्या कह रहे हैं. उनका ख्याल है गुलबर्ग से आगे कुछ भी नहीं. तो वो एक पूरा कल्चर था. वो फिल्म के गाने जो रिकॉर्ड होते थे वो मैंने उन लोगों को दोबारा कैप्चर करने की कोशिश की और उनकी स्टोरियाँ उनकी लाइफ के ऊपर उनके बारे में पता है किसी को कुछ नहीं है. अब लाल मेरी पास जो है हर शो के एंड पे बजता है, लेकिन जिस बंदे ने वो गाना लिखा है उसके बारे में पता है किसी को भूखा मरा है वो तो. और मैडम नूरजहान जिन्होंने गाया था वो गाना, जिन्होंने कंपोज नहीं किया था, जिन्होंने लिरिक्स नहीं लिखी थी, सब जानते हैं कि उन्होंने गाया है ये गाना, लेकिन एक्चुअल जो लोग जिन्होंने लिखा है और उनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता. बड़ी अजीब बात है That's true. है ना.
That's true. That's कि very एक true. फिल्म के एक्टर का आपको पता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि डायरेक्टर कौन था, बाकी सब क्या बाकी सब कौन मतलब लोग वो थे, एक्टर एक्टर का मुझे नजर पता आ रहा है है। लेकिन हाँ। उसके पीछे भी तो बहुत ये लोगों एक का हम काम लोगों है। ने खुद ही एक अपनी एक लिए अजाब बना दिया है कि पिछले चंद सालों से बिल्कुल इतना एक इंडस्ट्री तो है नहीं, इंडस्ट्री फंक्शनल होती है, Functional एक होती इंडस्ट्री है। की यूनियन होती है, एक इंडस्ट्री की एक हायरार्की होती है। हमारी इंडस्ट्री में तो बस ये इक्का दुक्का है, वो पता ही है तुम्हें। हाँ। इस तरह ही है कि कल को जो और especially during these times it's become even more difficult to maintain the industry that we have, the so-called industry that's there. कैसी इंडस्ट्री होगी कि जो सो कॉल्ड सिंगर थे वो एक्टर बन गए और जो एक्टर थे वो सिंगर बन गए। अब क्या करें, रोजी रोटी तो कमानी है ना सबने। हाँ ਅਸੀਂ ਤੇ पहले दिन तो म्यूजिक बजाइए तो ਅਸੀਂ हाली वही कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। But now that you've been working with various people and also different age जी bracket you've been dealing with, how is it connecting with the younger lot? Do you feel the difference? Do you feel that there is this gap? यंगर लॉट में भी देखें बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बट वही मसला है कि उन लोगों का आपको पता नहीं चलता क्योंकि उनके काम को अब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा। जो आपको दिखने को मिल रहा है, जो आपको कंजम्पशन के लिए एड्स आपके चल रहे हैं, जो कंपनीज म्यूज़िक प्रोग्राम्स बना रही हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोगों को बाईपास कर जाती हैं जो कि राइटफुली जिनको इन चीज़ों पे काम करना चाहिए, जिनको अपने टैलेंट्स एक्सप्लोर करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। वो एक हो जाता है कि यार इस बंदे की टीम है और इसमें कोई ये 20 बंदे हैं, तो इस टीम के अंदर अगर आप आ गए तो बड़ा अच्छा, नहीं तो आप सारा साल घर बैठे रहें। तो बारियां लगी हुई हैं, कभी किसी की टीम खेल रही है यानी कि उनके अपने चोजन बंदे हैं, कभी किसी की टीम खेल रही है। But have you ever felt this disconnect? क्या ये एक एज गैप आया हुआ है, मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, their wants and needs and their way, their approach is different? नहीं, कोई क्या एज गैप, मतलब बजाने के लिए तो फिर भी मेहनत चाहिए, तो अगर वो नहीं करेगा तो You can't. बेच तो होएगा और की होएगा। अगर बुसरा गाएगा 19 साल का या 90 साल का, सुनाई तो भैड़ा ही देगा, मैनू कहने की जरूरत ही नहीं होनी। अच्छा सही बात है, यही जो है सो है। I mean, चाहे वो पहले हो, पहले के लोग भी ऐसे ही थे, प्रैक्टिस करते थे। जिसने वही बात है, जो बुनियादी जो चीज़ें होती हैं उन पे जिन लोगों ने काम किया होता है ना, वो फॉर लाइफ फिर उन चीज़ों को पॉलिश करते रहते हैं, उसकी बुनियाद जो पक्की करते रहते हैं। बिल्कुल। और जो आजकल के जो आपको पता आएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है? क्या फ़र्क? ठीक है। अच्छा, now when it comes to career, do you feel like this is how life should be, or what's your take on life? How do you want to go? Like, do you go against the culture that we have, or there are certain things that you believe in कि हाँ सही है लेकिन हमें इस तरीके से करना चाहिए? Most likely. मतलब हमारी सोसाइटी बड़ी फैमिली ओरिएंटेड सोसाइटी है, इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी नहीं है। True. जो वेस्ट सोसाइटी है वो इंडिविजुअल ओरिएंटेड सोसाइटी है। उधर शादी करना ना करना, बच्चे होना ना होना, वो ऑप्शंस हैं उन लोगों के पास। हम लोग क्योंकि ज़रा विद फैमिलीज रहते हैं, बिल्कुल, हमारे माँ बाप हर वक्त हमारी साथ ही होते हैं, मतलब कि आप हम एटलीस्ट हम लोगों के घर में ब्रदर लिव्स विद अस, ही इज गॉट अ सेपरेट पोर्शन, इट्स अ जॉइंट फैमिली सिस्टम, बिकॉज वो घर ही ऐसा है कि उस साइज के घर को एक अकेला आदमी नहीं, नॉर्मल आदमी अकेला आदमी नहीं चला सकता। We just interviewed Yasser earlier, joint family system again. So it's great to see that there are people, there are families who still believe in joint family system. It's not that easy. How is it for you? नॉर्मल है, मतलब कि आपके मेरे लिए तो मैं बड़ा इंडिपेंडेंट सा इंसान हूँ, प्लस क्योंकि मेरा स्टूडियो भी मेरे घर के बिल्कुल साथ है, तो मेरे लिए कोई इतना इशू नहीं है। घर की ऑपरेशन जो है वो चलती रहती है और मेरी लाइफ जो है उस मेरी होना ना होना उससे वो लोग अफेक्ट नहीं होते। तो बेसिक जो बुनियादी चीज़ें जो होती हैं, जब तो फैमिली से कभी लाइक प्रेशर आया कि अच्छा म्यूजिक क्यों कर रहे हो तुम कोई और काम क्यों नहीं कर रहे हो, या तुम यूनिवर्सिटी उधर गए, तुम सैन फ्रांसिस्को जाके तुम म्यूजिक सीख कर आ गए हो? हाँ। कभी ये नहीं बोला क्या? नहीं, कभी नहीं कहा। नहीं, they were in favor of it if you're going for it. हाँ, they were worried I wouldn't come back. अच्छा, they were sure about that. नहीं, कि मतलब कि शायद नहीं आएगा वापस से। अच्छा। लेकिन मैं I wasn't that good to begin with, तो मेरे लिए रहना वहाँ बड़ा अजाब होता। अच्छा। और दूसरा ये कि मैं चाह ये रहा था कि
जो भी मैंने सीखा है ना उसको फिर मैं प्रैक्टिकली यूज़ भी कर सकूं, तो वो उस एनवायरनमेंट में रह के शायद मेरे लिए मुश्किल हो जाता, मेरे पास इतना टाइम ना होता और मैं इतनी वो टाइम चाहिए होता ना चीज़ों को प्रोसेस करने के लिए। यू नो, जस्ट बिकॉज यू कम आउट ऑफ कॉलेज विद समथिंग, उसका ये मतलब नहीं है कि आप एकदम उसके माहिर बन गए हैं, आपको ज़िंदगी लग जाती है इन चीज़ों को सीखते हुए, अप्लाई करते हुए, यूज़ कर, तो वो मुझे फिर पाकिस्तान में मैं कर सका। आई डोंट थिंक मैं वहाँ ये कर सकता। दिल तो बड़ा चाहता है बंदे का कि बाहर जाए, घूमे फिरे, बट हम हमेशा हाँ, लेकिन हम उन चीज़ों का सोच रहे होते हैं जो गोरे भी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं होता। इट्स अ मैकेनिकल लाइफ। भूल जाए, उधर तो रोबोट की तरह रहना पड़ता है दफा। पर यहाँ भी मैकेनिकली बन गई है लाइफ। चॉइस है ना यहाँ, लेकिन हाँ, दैट्स ट्रू, यू हैव एन ऑप्शन। जितना करना चाहती हैं आप करती हैं। और वो इंडिविजुअल्स वाली बात आ गई कि हमारी सोसाइटी इंडिविजुअल्स को प्रेफर नहीं करती। हाउ डू यू डील विद इट? नॉट वेरी वेल। क्या कर सकते हैं? यू आर अ रिबेल इन द सोसाइटी। या आई थिंक सो। हाँ, मतलब कुछ बुनियादी चीज़ों, अगेन वो बुनियादी बातों पे मसला आता है कि झूठ बोलना मुझे बड़ा बुरा अजीब सा लगता है कि यार क्या, मतलब कि ज़रूरत क्या है, एक झूठ बोलने के लिए 10 और भी बोलने पड़ते हैं। और दूसरा ये जो हमारे जो मुल्क के अंदर एक हसद सी पैदा हो गई है पैसे के लिए, शोहरत के लिए, बस किया कुछ है नहीं तो फेमस हो जी, फेमस हो, कि किस चीज़ की फेम है अभी? What do you think about the Instagram stars? बुरा ही हाल है। You see so many people, so many followers, never-ending followers, never-ending attention that they're getting. Does it bother you कि भाई मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, you don't compare yourself at all. नहीं, मैं क्या, क्योंकि इस वजह से, मतलब मेरी कोई शक्ल है कि मैं 4 मिलियन फॉलोअर मैनू वेख के तो ना नींदा सा उड़ जानी, ले दसो की गल की? No, you don't have to be beautiful or anything of the sort. But just the fact that you're like, इतना टाइम कहाँ से होता है किसी के पास? ले पिक्चर बनाओ, फिर उन्हें फिल्टर लाओ, बस शेयर भी करो, फिर लोगों ने यार भी शेयर कर दी मेरी तस्वीर, मेंशन भी कर दो, उसमें टैग भी कर दो। एक बीमारी है ये फ़ोन, ये इंस्टाग्राम, ये ट्विटर, स्नैप, ये बीमारियाँ हैं, ये अल्लाह की कसम बीमारियाँ हैं, कोई फ़ायदा नहीं इनका। आप इस पे 3 घंटे गुजारें और आप 3 घंटे जो है किताब पढ़ लें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि किताब पढ़ना जो है ना, आप उसका आपको फ़ायदा होगा। ये आपके दिमाग को कुछ भी सुकून नहीं देगा, तंग ही करेगा आप। So moving on, I know I don't want to get anything negative out of this when we talk about marriages and all of that. What I want to talk about is being in a bad relationship. Do you think it is wise for people to be in it or get out of it? What do you suggest? Because there are a lot of toxic relationships and people, they go for it, they're like, I'm married to this person and I have to live with this. कोई ज़बरदस्ती तो नहीं किसी ने की ना, मतलब आप अपनी मर्जी से एक चीज़ कर रहे हैं, अगर वो नहीं बार बार अगर रिजल्ट वही मिल रहा है तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। अगर स्पेशली अगर एक ऐसी चीज़ हो जाए आपकी लाइफ में कि आपकी पर्सनैलिटी इफेक्ट होना शुरू हो जाए, आप वो इंसान ही ना रहें जो आप पहले थे, You're losing yourself in a bad way. आप अपने आप से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे, आप खुद हैरान परेशान है कि यार मेरे से क्या हो रहा है। फिर मेरे ख्याल से फिर सोचने की बारी है कि कुछ और सोचा जाए, कुछ और, like letting go basically. करना ही बेहतर, हाँ। It's better. That's what I was having a discussion with Imran Abbas. उनके ऊपर बहुत होता है कि शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो. He's like, I'd rather be single than be with someone who's not right for me, which I thought that it's a great thing to say and to practice, you know. And I'm glad that you said that, because there are a lot of people who are in a toxic relationship, they're changing, they're negative and, you know, they're bitter about life, but they're like, यार रहना है इसमें। I'm like, नहीं, आपको नहीं रहने की ज़रूरत है। फिर कई बार ये भी होता है कि वो पैटर्न बन जाता है कि वही आप चीज़ जो है आपकी ज़िंदगी को ड्राइव कर रही है, और अगर वो नहीं है तो कोई कुछ रह नहीं गया पीछे। तो बड़ा वो अजीब सा सिचुएशन हो जाता है कि आपकी इंटायर कम्युनिकेशन जो है और आपकी जो सारी इंटरेक्शन है वो एक सॉर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस में गुजर रही है कि यार मतलब ये ना हो जाए, मतलब तो फिर और वो ऑकवर्ड हो जाती है सिचुएशन। आप एक चीज़ अवॉइड करना चाह रहे होते लेकिन वो और आगे नुमायाँ हो जाती है। तो बहुत स्ट्रेंज है, अज़ाब ही है वैसे।
आपस दी गाली हमेशा मिकाल मुझे लेक्चर करता है, तुम ना करी ना करो अजाब ही है, पैसे बना के कल्ले खा लो बेहतर ठीक है। अच्छा सही है। So what have you gained from the music industry in all these years? The people, the इस इंडस्ट्री से In आप this industry- I mean, किसी in और the- इंडस्ट्री की बात कर किस रहे हैं? industry ये की बात इंडस्ट्री कर नहीं सकते हो है, मैं? ये एक मजाक है जो हमारे साथ चल रहा है, कोई इंडस्ट्री What नहीं are you हमारे part पास। of then? What would you name अगर it? मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, अगर जनरल मुशर्रफ मीडिया ना खोलता ना, तो ना आपकी जॉब होती और ना मेरी होती। That's true. I 110% बस गल agree खत्म with हो you. गई। हाँ अगर वो उस टाइम पे हाँ, वो नेटवर्क्स और चैनल्स ना खुलते और ये इनकरेज ना करते, वो टाइमिंग अच्छी थी हमारे लिए। तो वो लोग जो क्रिएटिव थे, आर्टिस्टिक थे, वो आगे आए। अभी भी अगर आप देखें तो इंडस्ट्री में जिनके नाम बने हुए हैं, वो को नाम ढूंढने वाले बंदे के लिए आपको काफ़ी साल पीछे जाना पड़ता है। True. वो उस टाइम में निकले थे जब लोग अपनी वीडियोस निकालना शुरू हो गए थे, मीडिया खोल गया था, लोगों को एक्चुअल इंटरेस्ट हो गया था, क्योंकि आई थिंक हम लोग काफ़ी सारे यंग लोग, काफ़ी सारी यूथ जो थी वो मोटिवेटेड भी थी कि यार हम लोग अपनी लाइफ के साथ कुछ कर सकते हैं अगर हमारे में टैलेंट है। इंडस म्यूजिक पे कितनी वीडियोस चलती थी। But moving on, ladies and gentlemen, we have the segment, and what I do is Instagram में मैं आप लोग के स्टॉक करती हूँ, जो कि मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ, and मैंने कुछ तस्वीरें निकाली हैं, and I'm gonna ask you what's the story. So I came across this picture, and thanks to you, I had a chance to interview Sharmista, who's amazing. And Sheldon, what was happening here? Where were you guys in this picture? ये हमारी फोटो शूट थी, जो कि जो ड्रमर है जीनो बैंक्स उसके घर पे थी। अच्छा। और ये एक छोटा सा कोर्टयार्ड एरिया है, तकरीबन इसी साइज का। अच्छा। और इसके फ्रंट पे उनका हाउस है और राइट हैंड साइड पे जीनो का स्टूडियो है। तो हम लोग सारे जब भी रिहर्सल ब्रेक होती थी यहाँ बैठते थे। तो ये तस्वीर And उस वक्त- Sharmista and Sheldon were visiting then? नहीं, हम प्ले कर रहे थे। अच्छा। हमारी रिहर्सल्स चल रही थी और साथ हमारा जो मैनेजर था, हाँ। उसने कहा था सारे इधर आए हुए हो तो लेट्स जस्ट डू द शूट। अच्छा। दैट्स हाउ वी डिड द शूट। Right. So we And it's been a basically- while you guys haven't played together. Yeah. How does it feel? Not good. Not good at all, right? Yeah. And this is something, I think this is a recent thing that you had shared. एक चीज जो Instagram में हमारे Insta live session के बाद जो डाली थी वो ये थी। So ये क्या चल रहा था? ये वो जो रिवायत मैं कर रहा हूँ, जो म्यूजिक सीरीज Right. ये वो है। ये वो है। अच्छा। And this is all live. ये सारा वन गो लाइव है, वन टेक। And there's this guy on flute. पप्पू साहब, नहीं, not ये पप्पू उनके साहब। बेटे हैं। अच्छा, ये उनके बेटे हाँ, हैं। पप्पू साहब के बेटे हैं। Oh, how nice. अच्छा, great. This was a great session. You guys have stopped doing this? अभी रुका हुआ है, अच्छा। अभी हमने रोका हुआ है। अच्छा। तो हैं कुछ 3-4 आर्टिस्ट रहते थे, लेकिन ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी कंटेंट उस पर रिकॉर्ड किया हुआ है। Right. तो वो चाह रहे हैं कि उसको एडिट करके उसके Properly एपिसोड, वो- हाँ, प्लान आउट सारा उसका जो होता है, ग्राफिक्स ये वो फला, वीडियो, Right. कलर करेक्टिंग, ऑल ऑफ दैट, बिकॉज इट्स शॉट इन अ वेरी बेयर थ्रेडबेयर मैनर, हाँ, लाइक हाँ। जिस तरह एक्चुअल लाइव सेशन होता है, बिल्कुल उसी तरह शूट हुआ हुआ है। Right. This was a very cute image that I thought. So That's tell me my about last that. picture with my father. I Your think. last picture. I think so, yeah. This is how long ago? ये 2013 की है। Acha. And you were very close to him. Yeah. Very, very sweet. Very nice picture of you. और बाल भी बनाए हुए ना, खुले रखे हुए हैं, tamed hair, which I never get to see that much. नहीं, मैं बांधे ही रखता हूँ। Good पेट कोई ना times पाए। though. Good times. हाँ, बिल्कुल। Good times. So moving on, I would like to know you better, and so with the audience. So इसमें it's something that you don't like much. Okay. So इसमें 5 seconds है. Whatever thing that comes first to your mind, you say that, and कि आपने ये करना है. So, you ready? हाँ, चलो। What is happiness to you? ये क्या? Hi, he said something. Most adventurous thing you've done. शादी की थी। काफी एडवेंचरस था। वो काफी मेरे जैसे adventurous बंदे था. के लिए जिस हाँ, शॉकिंग था हाँ, सबके लिए चक्कर कि ही ये कोई नहीं। कैसे कब हाँ। कैसे कहाँ. Moving on, most badass quote याद होगा किसी का? नहीं, not one that comes to mind. नहीं। Dang, okay. Simplest change in your life that would have a big impact. Working out. You are already.
That's Achha, your most favorite lie. Even though you hate it, but I'm sure you use one. Yeah, sure. Like, I'm busy when I'm not busy. Now I know. Next time when he says that, I'll be like, yes. Like, you haven't done it? No. Like, I'm busy? No. Like, मैं call you later? नहीं आज नहीं हो सकता मैं बोल देती हूँ अब तो मैं सब कुछ कोविड के ऊपर डाल देती हूँ हाँ कोविड भी सब कुछ If you could be someone else, who would that be? I'm dealing with being myself. Okay, you're dealing with it. हाँ किसी और दा अपना आगे पता चले तो तो भी गया गुजरा इंसान सी फिर की फायदा है True. One should never dash. Lie. Achha, I'm busy. One shouldn't ever mess with Mekaal because I have I can be rude and make you very uncomfortable. yeah, and you won't regret it even for Not a at all. second. No, I have no qualms about doing it. Especially to someone जो कि ज़रा ज़्यादा अपने आप को समझता है ना और है इतना कोई Whatever. वो तो फिर मज़ा आंदा फिर चेहरा ले आंदा ठीक है क्यों भाई? क्यों? Why? वाह Okay. World would be a better place if अगर लोग ना होते family or friends. कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो फैमिली की तरह ही होते हैं वो दोनों नहीं कर सकते चूज क्या करना फ्रेंड्स तो वैसे ही एंड में छोड़ तो जाते हैं हाँ. तो फैमिली जो है वो तो बेचारी फंसी रहती है आपसे सारी जिंदगी Your most favorite song these days? ओह ये भी एक मुश्किल सवाल है जी क्योंकि इनको कुछ पसंद ही नहीं आता. नहीं मैं पिछले काफी महीनों से सिर्फ मैं लूथर वैंड्रॉस को सुन रहा हूँ अच्छा. so there's a song called My Sensitivity Oh, because which you're is so really nice sensitive. no you should listen to that song अच्छा. लूथर वैंड्रॉस का बड़ा अच्छा है Okay. 3 countries you wish to visit in the next 5 years. Russia Why? because I have a bunch of amazing musician friends who live there Oh, nice. Okay. so I want to see that But you're a great sport. Not so bad. You didn't ring the bell the last time also. Yeah, what you doing? बस हो गया. What you हो गया? बात That's खत्म, it. सब कुछ. But thank you so much for taking out time. Thank you. बड़ा ट्रिक करके आपको बुलाया गया है यहाँ पे आपको फिर कभी स्टोरी बताएंगे. ठीक है. But you're gonna enjoy your tea right now while Yeah. I am gonna jump on to the next segment. So you guys stay tuned in for right now. We have another segment. We're gonna bring in experts from Depilex. Hey everyone, we're back with a segment where we bring in experts from Depilex answering all your questions. This time around, yet another time, we have Maestro herself. Thank you for joining us. Thank you for calling me again. So where do you see the cosmetology sector, when it comes to Depilex Institute? I think more and more people are realizing, young boys, girls, men, women, that this is one industry which not only grooms them, grooms other people also, and empowers them. Mm-hmm. So it is more about empowering and the satisfaction that you get after you have actually completed a beauty job, may it be your hair colors or cut or makeup or a bride. The end result is always so beautiful. Right. So I see our industry, that means the beauty industry, going places, mm-hmm. and people becoming more conscious about it. They are. And it's about taking good care of yourself. It's mm-hmm. about taking care of your diet, your exercises, your sleeping pattern, right. Using the good products, quality right. products, and of course the knowledge of what beauty is all about. Absolutely. And then obviously professionally bhi grooming ki jaise aapne baat ki, a lot of people come to you कि मैं किससे अपने आप को groom करूं and all of that. So you also, I'm sure, kept that in mind also, that of now course, is the time. This is why our institute is actually going places. Mm-hmm. It's not just that the girls or women or boys or men are, and then there are other minorities also. Who come for their professional classes. Mm-hmm. If you want to become a professional makeup artist, hairdresser or esthetician, you have to first groom yourself. Right. And this is very important. So starting from yourself to imparting it is very important. Mm-hmm. And this
imparting your education or your hunar is actually empowering them. When you have that empowerment, when you have that confidence, then obviously you are actually in a position where you can say, voice your concern, especially women. When they're confident and empowered, they have that strength to go about their normal lives, and also for them to actually voice their concerns over any issues. Right. So that's a part of the confidence. You groom yourself, your look is part of it, and that extra oomph that you need to move on with life. And the next question that I have for you is a skincare tip that is evergreen for your audience watching now and is suitable for all age types, because audience mein to har koi hai. Yeah, okay. So I think drinking a lot of water is something really important. One of the cheapest beauty product, may it be summers or winters, please take a lot of water. And this water is not just drinking, but splashing your face with water is also very refreshing. It is. And so, after a hard day's work, you want to get rid of all the dirt and grime on your face, and it could be a good beauty regime of cleansing, toning and moisturizing, and yet in the end just splashing it with normal water, not too cold and not too hot. What do you have to say that icing with a bilkul baraf dal ke apna wo dip I karte hain? am not really I don't advocate that, because any temperature which is too high or too low is going to be harmful to your skin. Right. So moving on, I wanted to ask you, how can an individual help and support Depilex Smile Again Foundation for support, especially in times like these? I think if you visit our website, you'll get all the information how to help and support them. It is very, very important for all of us to support these women. ये वो बच्चियां हैं जिनके साथ ज़्यादती हुई है, जिनकी ज़िंदगी और उनके चेहरों से मुस्कुराहटें छीन ली गई हैं. सो जिसको भी अल्लाह ताला मौका देता है, वो खुश नसीब होते हैं कि वो उनकी मदद करें, किसी की भी मदद करें for that matter. Violence in any form is bad, लेकिन this is something which I call the worst form of domestic violence, कि आप उसको तेज़ाब से या मिट्टी के तेल से जला दें. So now that because of COVID and because of people not going out and so one would say कि शायद ये जो वायलेंस है ये कम हुआ होगा, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा भी हुआ है और तेज़ाब के जो वाक़यात हैं वो भी हमें सुनने में आए हैं. सो इट्स टाइम दैट वी शुड बी एडवोकेटिंग अबाउट इट. प्लीज़ राइट अबाउट इट, शेयर आवर स्टोरीज and discuss things and voice your concern, because this is very, very important that these girls should be given back their life and their smile again on their faces. Absolutely, because it's not going to be the same life, but we can always help them make it better for themselves the way it is, accept it and move on with their lives the way you guys do it. Thank you so much, Maestro ji, for joining us again, and I hope to see you soon. Do not disappear, do not go to Karachi or out of Pakistan abhi. Oops. Because बहुत लोग confused होते हैं कि Maestro ji अब लाहौर में होती है कि कराची में होती है. इनकी मेल्स कराची चली जाती हैं और लाहौर में वो कहते हैं वो तो रहती नहीं है. नहीं, मैं लाहौर में ही रहती हूँ. But see you soon, and thank you so much. We've reached the end of the episode. Hopefully you guys enjoyed it. Please do share your questions on Instagram and Facebook. We will be interacting with you guys, and the experts from Depilex will be more than happy to answer each and every question of yours. For right now, this is Sumi saying, Ba Amana Khuda.